have like a basic understanding of market structure and change of character. Okay, if you haven't watched that videos, we'll still have a bit of a revision here and understand that how we are going to use those concepts, and I will teach you a strategy which you can use in intraday trading as well as swing trader. Okay, and there are some rules you have to follow. So उसके लिए आपको मैं एक presentation भी show करूँगा, and in that presentation you will see a few of their examples. आप इंडेक्स में भी उसको यूज़ कर सकते हो, फिर स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हो, एज वेल एज फॉरेक्स मार्केट में भी यूज़ कर सकते हो. ओके, सो या लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. First, we'll do a revision of what is market structure, and then we'll jump on to the main strategy part. All right. So, what is market structure? So, market structure is basically the understanding of markets. Okay. How, first of all, how many trends are there? Okay. There are three trends. One is bearish trend. The second one is the bullish trend, and the third one is mostly the sideways trend. Okay. So, in the sideways trend, what we are generally going to do is we are generally not going to trade in the sideways market. Just a second, I have to just admit it all. Okay, now people can join, they can't be in the waiting room itself. Okay, all right. So yeah, so for let us understand what happens in bullish market. In bullish market हम क्या create करते हैं? We create higher highs and higher lows. Okay, and whenever price makes a new high, we say that it has been trading in an uptrend. So जब भी वो अपने previous high को break करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? What do we call that as? जब भी previous high को break करता है market, what do we call it as? We call it as break of structure. Okay, we call it as break of structure. So this is our uptrend. We call it as bullish order flow because prices are making higher highs and higher lows. Now the second trend is when price makes lower highs and lower lows. Okay, in that we generally break what previous lows. Okay, and whenever price breaks a low, what we call this as break of structure towards the downside, and with that we have an understanding that we are in a bearish trend, and that's why हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे instead of ये zone को क्या बोलते हैं हम, what do we call that zone as, and what do we call this zone as? In bullish market ये zone को क्या हम नाम देते हैं, and in bearish market ये zone को हम क्या नाम देते हैं? Not highs and lows, we call this zone as डिमांड एंड सप्लाई. ओके, सो ये जब भी आप एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन को देखोगे, एंड व्हेन प्राइस कम्स बैक फॉर अ रीटेस्ट टूवर्ड्स दिस जोन, जब भी प्राइस उसके वो जोन पे रीटेस्ट करने को आता है, दैट जोन इज जनरली कंसिडर्ड एज डिमांड जोन. ओके, एंड इन सेलिंग मार्केट व्हेन प्राइस कम्स टू इट्स सप्लाई जोन, ऑलराइट, तो विल लुक फॉर व्हाट आवर सेल ट्रेड. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया मार्केट स्ट्रक्चर का. सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? यस. नाउ वी हैव अ थर्ड थिंग विच इज कॉल्ड चेंज इन अ ट्रेंड, रिवर्सल, आप कुछ भी उसको बोल सकते हो. सो इसमें क्या होता है कि जब भी प्राइस एक ट्रेंड फॉलो करता है, वो हमेशा के लिए तो फॉलो नहीं करेगा. यस और नो? जब भी प्राइस एक अप ट्रेंड में रहेगा, डेफिनेटली इट विल give us a pull back, कभी ना कभी तो वो नीचे आएगा ही. ओके, सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई दोज ट्रेंड्स? सो आपने जब वो मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो देखा रहेगा, उसमें क्लियरली मेंशन था कि व्हेनेवर प्राइस मेक्स हायर हाइज एंड हायर लोज, ईच लो इज कॉल्ड व्हाट? अ स्ट्रॉन्ग लो. एंड जब भी प्राइस एक उसका प्रीवियस हाई ब्रेक करता है, वो हाई क्या होता है? वीक हाई. दैट्स वाई विच एवर स्ट्रक्चर इज वीक वो ब्रेक होगा. यस और नो? सो जब भी डाउन ट्रेंड में लो ब्रेक होता है, वाई? बिकॉज दैट लो इज अ वीक लो, एंड वो हाई सपोर्ट क्यों करता है? बिकॉज दैट हाई इज अ स्ट्रॉन्ग हाई. सो जब भी प्राइस, यस मैं रिविजन कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, सो जस्ट बी अ पार्ट ऑफ दिस राइट नाउ. बाद में आपको एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स का पता चल जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. ओके, सो जब भी हाई ये स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक करेगा
एंड देन वापस रीटेस्ट को आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन अ ट्रेंड। जब भी ये स्ट्रॉन्ग हाई ब्रेक करेगा, रीटेस्ट आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन अ ट्रेंड टुवर्ड्स दी ऑपोजिट साइड। मतलब अभी जो डाउन ट्रेंड चल रहा था प्राइस, वो अभी क्या हो चुका है, अप ट्रेंड में बदल चुका है। और जब भी अप ट्रेंड चल रहा था प्राइस, अभी वो क्या हो गया चुका है, चेंज हो के डाउन ट्रेंड में बदल चुका है। ओके, सो दिस वॉज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एज वेल एज द change of character. So we are going to use this strategy only to identify and take our entries and exits in markets. Okay, so here are the rules which on which time frame you are going to use this strategy, and how many trades are you are going to take per day एंड अदर क्राइटेरियाज ऑल्सो। सो ये सेटअप्स में हम सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही काम करेंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम एज इन यू आर गोइंग टू यूज दिस टाइम फ्रेम फॉर योर एंट्रीज। ओके, एंड आपका एनालिसिस जो रहेगा, विच इज़ वो हायर हाई हायर लो मार्क करने वाला पार्ट, वो रहेगा आपका 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ओके, सो यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एज इन मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, एंड देन वंस यू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, आप 5 मिनट पे क्या करोगे, 5 मिनट पे उसको एंट्री करोगे। ओके, इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए आप बेसिकली इसको इंट्राडे में ही यूज़ करना है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आपको सिर्फ 2 ट्रेड्स लेने के हैं इसमें। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड फेल जाता है, पूरे दिन के लिए आप ट्रेड नहीं करोगे, यू विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट डे। बट आपका समझो कि वो फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल जाता है, देन यू कैन रिस्क दैट गेन्स इनटू द सेकेंड ट्रेड। उसके लिए भी पूरा रिस्क ये नहीं करना है, गेन रिस्क नहीं करना है। एज इन इफ़ यू हैव मेड लेट्स से $1000, तो फिर आप उसका 30 to 40% रिस्क करके सेकेंड ट्रेड ले सकते हो। बट सेकेंड के बाद आपको थर्ड पे जंप नहीं करना है, यू विल ओनली स्टिक टू 2 ट्रेड्स पर डे। ओके, so you are going to use the exact same structure which we discussed here. Okay, so first of all, once you are going to identify the market structure, ये continuation pattern के ऊपर बेस नहीं है। आपको क्या करना है, आपको रिवर्सल ट्रेड्स इस पे लेने के हैं। ओके, अभी इस एग्जांपल में व्हाट वी आर डूइंग, पहले हमने हाई क्रिएट किया, फिर लो क्रिएट किया। देखो कि ये जो कैंडल है वो हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए, विक भी नहीं होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्लोज होने के बाद प्राइस शुड रिजेक्ट दैट लेवल, एंड देन ये लाइन दिख रही है आपको, उसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। और फिर प्राइस शुड गिव अस अ रीटेस्ट एग्जैक्टली हियर एट दिस लाइन। आपका एंट्री रहेगा वो पॉट, और टारगेट विल बी 1:2। ओके, ये आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम टारगेट रहेगा। अगर आपको उसके एक्सटेंड करना है, आप एक्सटेंड कर सकते हो अपनी मर्जी से, बट आई विल रिकमेंड कि आप मिनिमम एटलीस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ट्रेड करो, एंड कंसिस्टेंटली वही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को एटलीस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉलो करो। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि नहीं मार्केट अभी और जा सकता है मेरे डायरेक्शन के इसमें, तो बेटर है कि 1:2 पे मैक्सिमम क्वांटिटीज़ को आप ऑफलोड कर दीजिए, एंड जो रिमेनिंग क्वांटिटीज़ रहेगी, लेट्स से मैंने आउट ऑफ 100 70% निकाल दिया 1:2 पे, जो जो रिमेनिंग 30% रहेगा मैं उसी को होल्ड करके आगे चलूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। सो आपको टारगेट हमेशा 1:2 पे रखना है, एंड द स्टॉप लॉस विल ऑलवेज रिमेन अबाउ दैट स्विंग हाई जो कि रिजेक्ट हो चुका है। ओके, समझा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस पे? तो लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स कि हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई इट। सो ये एक फर्स्ट एग्जांपल है निफ्टी 50 का। यू कैन क्लियरली सी दैट द प्रीवियस ट्रेंड वाज व्हाट, price was making higher highs and higher lows. Okay, and ये this was the last swing high. The second day प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने गैप अप किया है। ओके, तो जब भी एज ए रिटेल ट्रेडर हमारा गैप अप के लिए क्या पर्सपेक्टिव रहता है कि प्राइस अगर गैप अप करता है तो हम क्या करते हैं, उसको बाय करते हैं। क्यों? बिकॉज वो रेजिस्टेंस है, मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। नाउ दैट रेजिस्टेंस हैज़ बिकम व्हाट, अ सपोर्ट। यस और नो? ओके, सो अगर आपने और एक चीज़ें सुनी रहेगी कि अगर प्राइस एक सेम लेवल्स मल्टीपल टाइम्स को हिट करता है, या फिर मल्टीपल टाइम्स वो प्राइस वो लेवल को टच करता है, दैट लेवल्स बिकम वीक, एंड इवेंचुअली प्राइस वो लेवल को ब्रेक करता है, एंड देन उसके आगे निकल जाता है। बट इन दिस केस व्हाट वी हैव, प्राइस
touch this level multiple times. If you understand the concept of liquidity, okay, liquidity क्या हो रहा है यहाँ पे, liquidity build up हो रहा है, the price is building up liquidity above this high. And the second thing what happened, so here there are two scenarios that market may do. Okay, because see, we are not fighting the market, we are just picking the probability that this may happen in the future. So what we are trying to identify here is, what was our concept? First of all, identify the swing structure. Okay, once you have identified the swing, in this case we have a high, price should at least give a proper close, और gap up gap down भी ठीक है चलेगा उसमें, and then wait for a close below that line. Once you got that close, wait for a retest, enter the price. You can place your stop loss just above this high, or you can pick any of this candle depending on uh, different strategy if you are using. उस हिसाब से you can place your stop loss. But आपका target क्या होना चाहिए? What should be your target? Your target should always be 1:2. Here it is more than 1:2, because why? Because I have taken out trade at this swing low, जिसको हम market structure बोलते हैं. So market structure पे मैंने 70% quantity of offload कर दी, या फिर take your partials there and then keep the remaining quantity and move with a proper trailing stop loss. Okay, so और एक example देखते हैं. So here there is one more example, same nifty 50 का है. I am using same strategy, identify the swing structure. Here we have a low, here we have a high, price took out that high. Okay, जिसकी मैंने बताया था कि a close above that high is important. Because why? Because either it can be two things, either the price will go and make higher highs and higher lows and choose higher levels, okay, or it will reject that level, grab the liquidity from that high, and then price may continue going towards the downside. Either you can choose market structure to book your profits, or go with 1:2. 1:2 minimum है, because most of the time प्राइस उतना टारगेट देता ही है. आप कोई भी मार्केट में यूज़ करो इसे. You can use it in Indian markets, you can use it in forex market as well as crypto markets. All you have to do is understand the market structure. इसमें ये strategy में, in this strategy you have to have a bias of a market. Okay, bias as in on which direction the market is moving. Okay, now here is the example which we took yesterday. If you are from the free telegram channel, ये मैंने सेम ट्रेड दिया था आपको इन दैट चैनल ओनली. यहाँ पे क्या है, वी हैव अ स्विंग लो, प्राइस टेकिंग आउट दैट स्विंग लो. ओके, अगर आप ये सेम चार्ट अभी के अभी 5 मिनट पे देखोगे, वी हैव अ क्लोज बिलो दैट लो एंड देन मार्केट कमिंग अबाउ दैट हाई. ओके, एंड देन व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर डूइंग waiting for a retest. Price came for a retest and then we have this huge target towards the upside. आप डायरेक्टली 1:2 पे जा सकते हो, या फिर go with the market structure according to आपको कैसे ट्रेड करना पसंद है. if you want to target huge moves, you can hold it with trailing stop loss. if not, go with 1:1 risk reward ratio. okay, so yeah, so this is one more trade. like यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकते हैं इफ़ यू स्पॉट इट प्रॉपरली. मेरे पास अभी सिर्फ 2 से 3 एग्जांपल है जिसमें मैंने स्टॉप लॉस हिट हुआ है. बिकॉज समटाइम्स मार्केट ऑब्वियसली आपको हमेशा वो 100% सक्सेस पे ट्रेड्स नहीं मिलेंगे. ओके, देर विल बी टाइम्स वेयर प्राइस विल हिट योर स्टॉप लॉस, बट इन दिस केस we haven't hit our stop loss. Price took out that liquidity what we have here. Now I haven't talked about change of character here. Okay, but can you see a change of character? Price making lower highs and lower lows, and the second day what we did here is price ने gap up दिया. Okay, second half पे price filled that gap, and ये अपना जो strategy था, पहली बात तो वो accomplished हो गया. but also here can I say we have a change of character? Yes, can I say we have a change of character? Yes, no, correct.
So इस पे now once you have entered the second day, price continues that move, but yes, you can definitely hold that trade for BTST also. Okay, now you can target the market structure, you can target 1:2, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. I have one more strategy to teach you, not in this session but on Saturday. पहले तो हम देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है जो आज हमने सीखा है ये पूरे वीक में कैसे काम करता है. आई वॉन्ट यू गाइज टू अप्लाई ईच एंड एवरी थिंग, बट देर इज़ अ कैच. आप मेरे को पता है कि मोस्ट ऑफ यू विल डेफिनेटली गो एंड ट्रेड दिस स्ट्रेट अवे, बट आई वॉन्ट यू टू डू पेपर ट्रेडिंग. पहले तो ऑब्वियसली हमें स्टार्ट अगर कुछ नया सीख रहे हैं, करेक्ट, तो डायरेक्टली तो उसको अप्लाई नहीं करेंगे, बराबर. फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीज़ें काम करती है, बट ओनली व्हेन आप अपने आँखों को उस तरीके से ट्रेन करते हो. यू हैव टू ट्रेन योर आइज लाइक दैट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न. ओके, why do we draw all this stuff on chart? Because we need to understand the pattern of a market, yes or no. So this is how you backtest it. Firstly, try to backtest it over this entire week, and then we will review this thing on our Saturday session. Okay, आप मुझे अपना चार्ट भेज सकते हो ऑन माई प्राइवेट टेलीग्राम. फिर उस पर विल रिव्यू दैट चार्ट कि कहाँ पे सही था कहाँ पे गलत था, एंड देन विल सी कि हाउ वी कैन अप्लाई द सेकेंड स्ट्रैटेजी इन टू दिस स्ट्रैटेजी इटसेल्फ. ओके, नाउ देर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स हियर. आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाई देंगे. मैं आपको और एक चार्ट पे लेके जाऊंगा विच इज़ टाटा स्टील, बिकॉज उसमें फॉर पास्ट फ्यू डेज काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ रहा है, एंड ओनली यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी आई एम एबल टू आइडेंटिफाई दिस मूवमेंट. ओके, सो हियर इज़ अ चार्ट ऑफ निफ्टी 50 जहाँ पे क्या हुआ था, स्टॉप्ड आउट हुए थे. ठीक है, यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी दैट काफ़ी मैनिपुलेशन है. ओके, एंड इवेंचुअली द स्ट्रैटेजी वर्कड, बट यहाँ पे मैं ये कह के तो नहीं चल सकता ना, हाँ चलो थोड़ा सा अभी प्राइस ने इसको उठा ही लिया है, स्विंग लो को उठाया है, एंड देन वी हैड अ रिजेक्शन, थोड़ा सा स्टॉप लॉस धीरे 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 करके बड़ा करते हैं. नहीं, इफ़ यू सी एनी स्विंग लो एट दिस पॉइंट, उतना ही आपको स्टॉप लॉस रखना है, इवन दो प्राइस goes into your favor. Okay, never chase the market, let market give you that opportunity and then enter. अभी previously यहाँ पे देखोगे we have this swing high taken out, and then as well as a change of character. That is why अंडरस्टैंडिंग द मार्केट स्ट्रक्चर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि ट्रेंड क्या चल रहा है, प्रीवियसली ट्रेंड क्या चल रहा है. ये निफ्टी 50 का चार्ट है. ये जब भी प्राइस ने ऑल टाइम हाई बनाया था, इफ़ यू गाइस रिमेंबर व्हेन द प्राइस मेड ऑल टाइम हाई, फिर प्राइस स्टार्ट्स टू कंसोलिडेट एंड देन वी हैड अ ह्यूज रिवर्सल जो फॉल अभी भी चल रहा है. यस और नो. तो हाउ वी would have identified that thing? Can you notice one thing here? We have this last swing high, low, and then price made all time high. Okay, वो जो 20,000 तक आके आके रह गया, and the second day क्या हुआ, price gave us a gap down. Can you see anything, any sign of reversal that give us a sign कि now price has started a downtrend market? Can you see a change of character here, yes or no? And I will show you where is that change of character, and then tell me, did you spot that exact change of character or not? I need a yes and no from each and every one of you. Try to be involved, guys. तभी आपको समझ में आएगा. Can you see a change of character that gave us a sign of market reversal much early on? Okay, और अभी जाके वो सेम चीज़ अप्लाई हुई है, स्टार्ट हुआ है यहाँ से, और आज मार्केट नीचे. ओके, सो दिस वाज द चेंज ऑफ कैरेक्टर. ओके, दिस वाज द चेंज ऑफ कैरेक्टर. एंड द सेकंड डे कंफर्मेशन कैसे मिला? चलो ये तो बहुत ही चॉपी मार्केट था, यहाँ पे ट्रेड करना सबके बस की बात नहीं है. व्हाट वी डिड हियर इज वेट फॉर अ पुल बैक, give us another change of character. This was that change of character. Okay, and then price came for a pullback, insert into this supply zone, and then उसके बाद price just went lower highs and lower lows.
all those supplies and demands are valid which are under 0.5 pips of the major swing discount, then yes, they are. जो supply zone which is above premium zone, those are all valid, and the demand zone which is below the discount zone, they are valid. Okay, and between that we are not going to count them as supply and demand. But eventually you have to understand the market structure. How do we identify whether it is a change of character or inducement? See, inducement happens when price gives you fake move whenever there is a supply and demand zone nearby. Okay, and a change of character is mostly happens when there is a liquidity sweep or breakout structure previously, and then price takes out the strong high or low. Okay, but here also we need a stronger displacement to identify a change of character or breakout structure. Strong displacement as in a strong move and price breaking the previous high and previous low. See, you can't identify each and everything as in ये हो गया फिर तो मतलब आप कभी मार्केट में लॉस ही नहीं करोगे, ऐसी ऐसी बात हो जाती है. जस्ट टू एक ट्रिक है कि उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो जस्ट बाय लुकिंग एट कि हाउ स्ट्रॉन्ग द प्राइसेस आर ब्रेकिंग those highs and lows. If you see a strong movement that price is breaking its previous high, then you can identify that yes, that is a valid change of character or breakout structure. Here you can see that, see, we had a gap up, but also the movement continued from there. Okay, and then slowly and steadily price came back to its demand zone, and because of that the previous market structure was bullish. That's why this short trade failed. Okay, so you have to see and we have to train your eyes like that. As I told you, you need a lot practice on your charts, and once you start identifying those things, then you will like once you start experiencing those start gaining experience basically, then you will start understanding that yes, this is a valid change of character and this is a valid break of structure. Okay, here also you can see that, see, can you like see my cursor over here? Okay, so we have a fake breakout structure. Okay, fake breakout structure. Now why I'm calling it as a fake breakout structure, because one of you will be watching this chart on 1 minute time frame, other one will be watching this chart on 5 minute time frame. So each time frame is going to give you a different perspective of a market, yes or no? Each time frame is going to give you a different perspective of a market. So the person who is watching this chart on 1 minute time frame, what he will think is that this break above is a valid breakout structure. Why? Because he will be looking at multiple green candles going towards the upside, and then that person will look for a buy trade whenever price comes back to its demand zone. But the person who is watching it on higher time frame, he knows that this moves can be highly manipulative, and that's why I'm only going to focus on one single time frame for my entries. So for our entries we are going to use 5 minute and 15 minute time frame. If you are good enough, if you have better more experience than me, you can then choose 3 minute 1 minute time frame, but that is like a whole completely different perspective of a market. That's why you need to have a bias and understanding of high time frame. That's why I'm emphasizing more and more on high time frame. Why? Because that is the whole thing. You can't just trade intraday just by looking at breakouts and breakdowns, yes or no? So for that you need a understanding of market structure. Okay, so here you can see that we have a fake breakout structure, market taking out this low with a strong displacement. What do I mean by strong displacement? Is strong move towards the downside, and this was where the price came for a pullback towards its supply zone, and then again the sell off starts from there. Okay, so here when market came for another pull back towards its demand zone, price starts going towards the upside. So basically here, which kind of trend is this? Is this an uptrend or downtrend? What do you guys can see? We talked about three trends. Can Which kind of trend do you guys identify here? One is telling uptrend, other one is telling uptrend, but I don't think so this is
this was an uptrend on higher time frame. I completely agree, but you don't know what is going to happen in future. Yes, right? So what is happening here? It is sideways trend, correct? Okay, so in sideways trend, mostly you can get opportunities on both side, but you have to play safe here. Okay, so you have to play safe, क्योंकि कभी क्या होता है, जब भी आप साइडवेज ट्रेंड करते हो, आप में वो ओवर कॉन्फिडेंस वाला भूत जाग जाएगा डेफिनेटली, एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग योर सेल्फ एज अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, एंड जब भी आपको लगता है कि हाँ मार्केट मेरे लेवल पे आ गया, उससे लेवल से ये करेगा, रिवर्स करेगा, नहीं वैसा नहीं करना हमें. सी, नाउ लुकिंग एट द मार्केट वी कैन ईजिली से कि हाँ रे यहाँ से मैंने शॉर्ट लिया रहता तो मैं इतना कमाता, यहाँ से मैंने लॉन्ग लिया रहता तो मैं इतना कमाता, बट ट्रेडिंग दिस थिंग्स इंटायरली ऑन लाइव मार्केट इज बिट ट्रिकी देन लुकिंग एट आफ्टर मार्केट्स. ओके, सो बेटर ये है कि ट्रेड with the direction of a trend rather than trading that in the against of a trend. You definitely ये trades आप ले सकते हो, but what if you start taking trades here? Okay, that time आपके क्या हो जाएगा, stop loss hit हो जाएगा. Okay, so better है कि ट्रेंड के साथ चलो. ये जो प्रीवियसली जितने भी उसने डाउन मूव्स दिए हैं उसको अवॉइड करो, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि हाँ एक दो बार मार्केट आपके फेवर में चला जाएगा, बट द थर्ड टाइम व्हेन यू स्टार्ट कैचिंग दो ट्रेड द मार्केट में गो अगेंस्ट यू. ओके, सो बेटर है कि अपने ट्रेंड के साथ चलो. जैसे जैसे ये हायर हाइस हायर लोस फॉर्म कर रहा है, विथ ईच लोस प्राइस कम्स फॉर अ पुल बैक, go with your buy trade. Okay, and to identify a valid level, ये एक important point है, वो note down करो. Always look for a fake breakout structure, which is basically liquidity sweep. यहाँ पे we have a fake breakout towards the downside, price gap up करके ये high को break किया, came for a pullback. Again the same thing happened here, price took out this low, gap up किया, price came back to this low here, and then the price continue from there. Okay, uh, please stop doing this link to. Okay, so yeah, this is one more example of Nifty stopping out, is that taking out this liquidity, price ने reverse दिया. If you would have taken this trade over here, you would have get a 1:2 restore ratio trade easily. But yes, second time वापस वो level पे आया, price went into our favor but also taking us out in that process. Okay, तो इसमें थोड़ा सा डिपेंड करता है कि हाउ मच यू आर विलिंग टू रिस्क. बेसिकली इफ आई एम ट्रेडिंग निफ्टी 50, ओके, सो आई एम रिस्किंग, मैं ये इन द मनी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे और एक मैं बोनस चीज़ देना चाहता हूँ आपको कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू चूज़ अ प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस, ओके, या फिर आप इवन दो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस यूज़ करते हो, आपका प्रीमियम फिर भी अप्रिशिएट नहीं करता. ओके, सो स्ट्राइक प्राइस के पास ध्यान मत दो, प्रीमियम देखो कितना है. इफ़ द प्रीमियम इज अबाउ 150 टिल 190, नॉट अबाउ दैट. ओके, 150 190 के बीच में कोई भी आपको प्रीमियम मिले, आप वो ट्रेड करो. ओके, स्ट्राइक प्राइस डज मैटर बिकॉज वो ऑब्वियसली इन द मनी ही होगा. ओके, 150 190 के बीच में हमें प्रीमियम उठाना है, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं और उसके नीचे भी बिल्कुल नहीं. लेट्स से सम ऑफ द टाइम कोई अभी स्टार्ट कर रहा है एंड उसके पास उतना फंड्स नहीं है, तो दे कैन डेफिनेटली गो विथ लोअर प्रीमियम्स. बट इफ़ यू हैव इनफ कैपिटल टू बाय अ सिंगल लॉट ऑफ दैट प्रीमियम इन बिटवीन दैट जो मैंने प्रीमियम बताया उसमें, तो यू कैन डेफिनेटली गो विथ इट. और आपको स्टॉप लॉस, लेट्स से यहाँ पे हम स्पॉट चार्ट को देख के स्टॉप लॉस लगाते हैं, बट इफ़ यू आर ट्रेडिंग, yes, on expiry also, see most of the time what happen in expiry is that the option premiums are cheap, so you what you will do is buy the cheaper one, and then you will have that anticipation that price will boom from there. But it happens only when you don't trade in that particular day. Okay, so it was basically a joke कि जब भी हम ट्रेड नहीं लेते
तभी प्राइस अपने फेवर में अच्छे से मूव करता है, और जब हम ट्रेड लेते हैं तो मार्केट साइडवेज जाता है. सो बेटर है कि always choose a premium which is above 150 to till 190, and during expiry if you find that those premiums, those can be deep in the money. Okay, so better, instead of taking those current expiry, you can choose the next expiry. That is my recommendation. But yeah, you can definitely go with the current week expiry with the cheaper option price. It's all on you. See, one more thing, ये भी note down कर लो कि if you are trading the current week expiry with current strike price, trade after like 130 and 2. Okay, don't trade before that, because most of the time during expiry the prices are just consolidating, और या फिर already वो trend खत्म हो चुका रहता है. And the second half, which is after 12:30 when the European markets open, the original trend starts. So if you want to trade the expiry, trade after 1:30 or 2 नहीं, but 1 के आसपास. Okay, so yeah, and the stop loss, if you are using that strategy 150 190 के आसपास, so keep your stop loss between 15 to 20 points. Okay, and target, use this as 1:2. If you are not able to have, like let's say this, ये जो stop loss है, it is between 9-10 rupees. Okay, so use, सी की मेरा स्टॉप लॉस एटलीस्ट अबाउ 15-20 रुपीज़ होना चाहिए. ओके, दैट्स ओनली यू विल हैव अ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. ये मैं टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम ये कर बता रहा हूँ. इफ़ यू हैव like higher time frame view, so the stop loss will be bit bigger, like it can be 70-80 points, depend on आप if you are a day trader or an intraday trader, वो depend करता है. So the main motive is कि अगर आप अपना एंट्री सेट करके रखे हो and also you have a stop loss, your risk reward ratio will should be favorable as compared to your target. And what is our risk reward ratio? 2:1. We don't have to look at option charts here. Okay, ऑप्शन चार्ट पे ध्यान नहीं देना है हमें, कि ऑप्शन चार्ट में क्या होता है कि जैसे जैसे प्रीमियम डेप्रिशिएट होता जाएगा, दैट ऑप्शन चार्ट विल ऑल्सो start decreasing. Okay, so always look at either future chart or the spot chart for your entry exits more rules. Okay, so here is an example of you on Euro USD. If you are curious enough if this strategy works on for forex market or not, it definitely works on forex market. But as I told you, you need a better perspective of the entire market structure. Okay, so we took out this high, price start trading towards the upside, price came back here, breaking below this low, consolidated in between that range itself. The stop loss was about this high, and the target was either the market structure or 1:2 risk reward trade. Yes, we'll definitely give the recording to you after this session. Okay, there is one more trade, price taking out old highs. We have a change of character on lower prices, and then this was also a good trade, but the thing is that the stop loss was a bit higher than expected. So just an example sake, I'm just showing you this one. And this is a trade on bank nifty. You can clearly see that we are making this pattern again. Price took out that high, rejecting from that high, close, retest, and then the price continues from there. Okay, so this is here why it is important to have that fixed risk reward ratio trade, because if you have an expectation that yes, price will move into your favor no matter what, because yes, Nikhil has told some of your strategy and that's why you are following that particular trade, it doesn't happen like that. Okay, always follow a presets of rule, always have an minimum expectations from the market. Okay, some market have fulfilled each and every one expectations, but why? Because they have a presets of rule from the market. Okay, so always target 1:2. Once you have hit that 1:2, exit, get out from that trade, shut down your system and do something else. Okay, and let market do whatever it wants to do.
बट येस ऑलवेज हैव अ फिक्स टारगेट. स्टॉप लॉस आपके हिसाब से आप रख सकते हो, बट टारगेट हमेशा वो स्टॉप लॉस और इसके इसमें ही रखना, 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो ही में ही रखना. दैट्स वाई यूज दैट लॉन्ग एंड शॉर्ट टूल. इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद trading view, or if you use the trading view, use this tool as long and short tool, you will definitely get that thing. So for bank nifty, yes, for bank nifty, thanks for reminding me. For bank nifty, use premium about 300 and 350, not more than that. If you go like 400 500, which are pretty much expensive whenever there is a fresh expiry wala strike price, the strike price of in the money also is sometimes 450. Okay, so go with strike price which is in between 300 and 350. 400 भी चलेगा, but that is also very much expensive. तभी आपको समझना चाहिए कि if the premiums are way too expensive ना, never, like मेरे हिसाब से, in my experience, I don't know about you guys, whenever the premiums are expensive, I don't like to trade options for that particular day. Because sometimes why those premiums are expensive, because people are basically buying. Okay, that's why prices are rising, and then once the demand is fulfilled, the supply starts, correct, and that's why there is a fall in price. So जब भी आपको प्रीमियम ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है, डोंट ट्रेड फॉर दैट डे. ओके, जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगा वो प्रीमियम से उसका डिक्रीज होते जाएगा. विच टूल, लेट मी शो यू. So this is a trading view platform. Okay, यहाँ पे 1 2 3 4 5 फिफ्थ ऑप्शन पे आपको मिलेगा long positions and short position. If I click on long position, you can see that there is a red box and there is a blue box. This is my target and this is my stop loss. Okay, so whenever you are setting up your entries, let's say this is my entry point, this is my entry point, and price comes to your entry. Okay, you place your stop loss. For example, here now I have to look for what, 1:2 risk reward ratio. Can you see this number here, 3.36? Yes, no? Can you see this number? So that number represent the risk reward, so I have to set it to 2. Okay, so I have a 1:2 risk reward ratio trade. Same for short tool. This is the short tool, this is your entry, the red color is your stop loss. I have to set your targets and stop loss according to 1:2 risk reward ratio. Okay, I'm not going to talk about premium and discount zone in this particular session. This particular session is entirely on the strategy itself. Okay, so if you have any question related to this strategy, then only ask. If not, we'll keep a different session for that if some of that day arrives. Okay, so here is one more trade, same trend पे है जैसे कि मैंने बताया. See, look at this, we achieved our 1:2 target and then price reversed from there. But also, can you notice a pattern over here? Can you notice a pattern over here, that it gave you a signal that it is time to exit from that trade? Can you notice a pattern? मैंने जानबूझ के वो सब चीज़ें ड्रॉ नहीं की है, जस्ट टू सी दैट डिड यू गाइज आइडेंटिफाई द change of character or not. Yes, we have a proper change of character. Price taking out this low. Okay, giving us a change of character here. I guess so we have taken out that low also, but it doesn't matter. इतना अगर आप पिन पॉइंट करने जाओगे चीज़ें तो हर एक चीज़ आपको स्टॉप हंटी लगेगी. सो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू keep your stop loss just exactly below that low. We are going to keep like 10-20 points buffer also. Okay, so let's say we enter into that trade, keep our stop loss below that low, and then again target 1:2 from there. Okay, or this market structure, you can see that how impulsively price move from there. Again, we took out this high, price made a swing low, again a high. Here there is no change of character. Okay, a change of character, to identify a valid change of character you need to identify a valid low, a swing low. Here we have a swing low,
here we made a high through. So to become a change of character, price has to break this low. Okay, and in this case price just wicked that low. Okay, and identifying the previous price action, I can say that price will continues to go down. We came for a retest. यहाँ पे मैंने ये चूज़ क्यों किया, why I'm using this zone as, this zone is called as order block. Okay, so I'm using that order block as my entry, and the second day you can see that price continue going towards the downside from that continuation of trend. Okay, here also we took out this low. Okay, we took out this low, but do we have any change of character? Can you identify any change of character from there? सी देर आर टू थिंग्स. अगर मैं तुम्हें ऐसे भी एग्जांपल्स निकाल के दिखा सकता हूँ कि जहाँ पे प्राइस हैज जस्ट विक्ड अ सर्टन लो एंड देन people consider that as a change of character. Okay, but for me, a valid anything valid is there should be a strong displacement like this. Okay, or there should be a continuation of a trend to identify a certain things in the market. A wick, I think so for few people that those are a valid change of character, but for me, wick are nothing but a liquidity sweep. Sometimes they work, sometimes they don't. If you are lucky enough, not I guess not luck. It is basically an entire understanding of how the market works and the market structure. Okay, even though if I wanted to go long from there ना, तो मैं यहाँ से ही लॉन्ग जाता, मैं यहाँ से लॉन्ग जाता भी नहीं. वाई? इफ़ यू हैव अ लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीमियम एंड डिस्काउंट, तो ये जो लेवल है दिस आर इनसाइड अ premium zone, and whenever there is a premium zone, mostly sellers are more active than the buyers. So if I want to buy something, I will wait for price to come inside a discount zone. Until unless, I won't be looking for any buy trades from there. So yeah, another example of Fin Nifty, which was yesterday itself, price taking out that previous low liquidity. And also here, unlike Nifty 50, there was like multiple time retest, but I choose to take this trade. Why? Because we have a proper displacement. As you can see that we have a proper change of character over here. See why? Because we have a stronger displacement over here. Okay, and also what is this? As I told you, if you see any fake move, if you are marking a zone, okay, we are marking a demand or supply zone, and market gives you a fake move without touching that supply and demand zone, that is probably called inducement. Inducement is nothing but a part of liquidity. Price grab that liquidity, and then the moves continue from there. Okay, last example, which is, nope, there are two more. So yeah, see, price taking out low, change of character, giving us a retest, and then price continues to go up. You will definitely get this PPT with the recording. Okay, again, price taking out liquidity. Also, this is one more thing which is called fair value gap. Price creating fair value gap, testing it, stop loss below that, target buy side liquidity over here. And this is our last example of buy side liquidity, as in price taking out previous swing high, change of character, a retest, even though you choose 1:2, but also you can see that how market reacted from there. Okay, so the thing is, see, we can't anticipate like how much the market will fall. If you go to like August 9th of August, okay, price came to a certain level, and from there we had a direct reversal from there. Okay, so that's why I say कि एक particular points तक ही ये करो, रखो प्रॉफिट्स रखो, एंड उसके बाद मार्केट को जितना जाना है जाने दो. until and unless if price doesn't fits your criteria, okay, until and unless अगर प्राइस अगर आपके क्राइटेरिया में फिट नहीं होता, तब तक ना उस पर ट्रेड ही मत लो. उसके बीच में कितना भी मार्केट मूव होने दो, ऊपर नीचे जाने दो, 100,000 2,000 पॉइंट जाने दो. ओके, बट सी एक एग्जांपल देता हूँ आपको, क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ. ऑल टाइम हाई का एग्जांपल देता हूँ. नाउ
whenever price makes a all time high, what is the anticipation of normal retail traders? आप ही बताओ, what is your anticipation that when a price makes a all time high, वो क्या करेगा आगे जाके? What do you think? अगर प्राइस एक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, व्हाट डू यू थिंक द प्राइस विल डू? इट विल गो टू हायर लेवल्स, यस और नो? क्यों? बिकॉज देर इज नो रेजिस्टेंस, राइट? सो बट वॉट हैपन कि आपने यहाँ पे बाय कर लिया ऑल टाइम हाई पे, एंड सेकेंड डे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चलो 20,000 छोड़ के मार्केट और ऊपर निकल जाएगा. इट डजेंट हैपन लाइक दैट. until unless you don't see your entry criteria has been fulfilled, तब तक आप कोई ट्रेड इनिशिएट ही नहीं करोगे. ओके, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वी टुक अ ट्रेड. मैंने अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे भी पोस्ट किया था. व्हाई? because we have a proper market structure, because market was making higher highs and higher lows. Until and unless this order flow is not been disrupted, the order flow is not been taken out, मैं तब तक कोई भी शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा. एंड वन व्हाट हैपेंड, द सेकेंड डे प्राइस gave us a gap down, and then we have a change of character, and just by following the order flow you can simply continue with the market trend. यहाँ पे भी देखो we have a change of character, फिर price coming for a फिर pull back again, change of character, sorry, a breakout structure, same. So process just continues. So I have to keep that in check, is that the higher time frame trend is still intact. ओके, सो until and unless, so let's say मेरे को कल का मार्केट का प्रेडिक्शन करना है. ऑर्डर फ्लो एज इन कौन से साइड से मार्केट जा रहा है, बुलिश ऑर्डर फ्लो है कि बेरिश ऑर्डर फ्लो? तो ये जो अप ट्रेंड है ये बुलिश ऑर्डर फ्लो है, ये जो डाउन ट्रेंड है दिस इज द बेरिश ऑर्डर फ्लो. So until order flow as in the chain, until unless the chain is not been break, the market will continue that order flow. Once the chain is break, there will be a change of character. Okay, so here what we have here on hourly time frame, ऑर्डर फ्लो जहाँ रिटेलर्स का शॉप लॉस होता है, नहीं वो नहीं. और लिक्विडिटी जहाँ पे रिटेलर्स का शॉप लॉस होता है, ऑर्डर फ्लो इज वेयर वी आर आइडेंटिफाइंग द डायरेक्शन ऑफ अ मार्केट. Okay, so here what we have to do is identify the trend. Market making SWOT, lower high, lower low. This is the low, last swing low, and then we made a higher lower high. Okay, here मेरे पास जो लास्ट हाई है वो ये है. ओके, एंड उसके बाद प्राइस ने, व्हाट डू यू गाइस कैन सी हियर, ये हाई है. ओके, इसके ऊपर प्राइस के पास क्या है, सप्लाई जोन है और या फिर जोन है. व्हाट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट राइट नाउ, कि वेन एवर यू सी अ फेक मूव, और फेक मूव नहीं, प्राइस इज नॉट टैपिंग टू इट्स supply zone. So this is probably what our inducement, and whenever there is liquidity, price will go and attract that liquidity. If tomorrow we gap above this high, buy कर सकते हो आप for this as your target. Understood? But ये थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम ही हो गया, but still we swept this low here, and on 5-minute time frame we have like a proper market making higher highs and higher lows. कल के दिन ये जो सप्लाई था, market took out this low, sorry, this high, and we are still above this low right here. Okay, so कल कि ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ द मार्केट्स आर गोइंग टू परफॉर्म, बट आई थिंक सो वी आर इन अ distribution. This is the distribution phase 1. So this is all liquidity above that price, and all the zones which are above this highs are all been mitigated as in test हो चुके. So there are chances that market may go up. Okay, so let's see क्या होता है. Alright then, so thank you so much for joining guys today. आपको recording मिल जाएगा, and the further instruction I will give you through Telegram itself. Let's see how we
विल स्टार्ट अप्लाइंग द स्ट्रैटेजी फ्रॉम टुमारो, और जो भी ट्रेड्स मुझे मिलेंगे आई विल सेंड यू इन द टेलीग्राम चैनल इटसेल्फ. ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड होप यू लाइक दिस सेशन, होप यू लर्न समथिंग न्यू. अगर नहीं भी हुआ तो भी यू आर अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी. ओके, thank you so much guys. Bye bye, take care and see you guys next weekend.